Okay, good morning everyone. So in the last lecture, we have reached at the point where we can see the different versions of data types present in Python. Okay, so let's start with the left concept. As here we here we can stop in the last lecture where we can see the string data type, and string is a object, is a sequence. Like we can say that string is the collection of characters and numbers. Okay, so and while we are referring the strings in Python, so we use the index concept, which starts from 0. This same and index concept we had used while we are dealing with the arrays in C++ and Java. Okay, so you are too familiar about that concept index, जो 0 से start होगा और खत्म कहाँ पे होगा in -1 से. Okay, so यहाँ पे देखो, the user passes the string hello, and on the next line he want to find out the length of that particular string. So using len function, and in the square bracket he simply put the variable name s. Okay, so the variable s consists hello string, and the length of the string is 1 2 3 4 5 HELLO. Okay, so the 5 will be print on the next line. On the next transaction he want to see which letter is present at the first position of the string. So array या फिर array नाही बोलू शकत आपण त्याला, string is starting from zeroth position. Okay, so zeroth position and first element. So at the zeroth position and the first element of the string is h, so h will be my output. Okay, त्याच्यानंतर बघा याला इसको फाइंड आउट करना है चौथे नंबर पे कौन सा है. सो 0 से स्टार्ट हो रहा है, सो 0 1 2 3 4 5. ओके, सो लास्ट में कौन सा है ओ, सो ओ विल बी प्रिंट. ओके, एंड S5. अभी ये the string consists 5 characters, but the indexing starts from 0. So the number figure is 5, but 0 5 means 0 से start हो रहा है, so वो 0 1 2 3 4, 0 से लेके 4 तक, मतलब वो 0 to 4, it is about the 5 for the compiler. Okay, in our sense जरी आपण 5 बोललो तरी पण, so that string will be starting from 0. so 0 से लेके 4 तक ही वो 5 number figure complete हो रहा है. Okay, so if I'm printing the if I want to get the fifth element, and uh, using this string syntax, if I'm passing this string of fifth element, so the compiler will throw error as the traceback most recent call last, या फिर वो indexing error जो कुछ भी रहेगा वो string index out of range. Okay, -1. ओके, -1 पे अभी ये -1 का सीन क्या है देख लेते हैं एक बार. यहाँ पे देखो, -1 उन लोग ने दिया, तो -1 पे मुझे मिल रहा है ओ. सिमिलरली S3 और कोलन मीन्स 3H2 नल, तो मुझे मिल रहा है LO. हाँ, एंड 2H2 5, सो मुझे मिल रहा है LLO. सो 2H2 5 मीन्स जो पहले आउट ऑफ 5 जो पहले दो एलिमेंट है वो स्किप करके मुझे आउटपुट चाहिए. ठीक है, सो वो क्या मिलेगा LLO. ओके, ये 3H2 नल मीन्स क्या, आउट ऑफ 5 जो 3 एलिमेंट है पहले, वो 3 एलिमेंट डिनाई करके मुझे बाकी वाले एलिमेंट है, तो मुझे LO मिलेगा. और S2 -1 मीन्स वो भी वो यहाँ से चालू हो रहा है, जो अपना यहाँ से चालू हो रहा था 0, वो भी यहाँ से चालू हो रहा है, एंड आई एम गेटिंग द O स्ट्रिंग. ओके, ये डिटेल में और डिस्कस करेंगे हम लोग व्हेन वी आर डीलिंग विद द एक्चुअल प्रोग्राम. ओके, स्ट्रिंग्स कंटिन्यूड हो रहा है यहाँ पे. स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट सपोर्ट कॉन्केटिनेशन एंड रिपीटेशन ऑपरेशन. नाउ we know the what is concatenation and repetition. Okay, so s क्या था अपना, अभी यही कंटिन्यू हो रहा है. s, the variable s consist hello world. Okay, hello string वो consist कर रहा है, and if I'm passing at the terminal s plus world, so my output will be hello world. Okay, similarly s plus world exclamatory mark. Okay, so यहाँ पे देखो hello और world space consist हो रहा है,
यहाँ पे देखो स्पेस दिया उन लोग ने, सो वो स्पेस कंसिस्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन एस इंटू फोर, सो हेलो 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 4 बार वो प्रिंट हो रहा है। हाँ, एस प्लस वर्ल्ड इंटू फोर, सो क्या होगा, हेलो और वर्ल्ड 4 बार प्रिंट होगा, स्पेस है तो वो स्पेस के साथ वो प्रिंट होने वाला है। देन एस प्लस, ब्रैकेट में लिखा है मैंने, मैं सो बाय स्ट्रिंग इज एस प्लस वर्ल्ड एंड इंटू फोर, सो वो क्या होगा, एस क्या है मेरा, हेलो है, सो हेलो वर्ल्ड ऐसे 4 बार प्रिंट होने वाला है, देखो हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, ओके। सो दीज आर द बेसिक ट्रांजेक्शन, बेसिक ऑपरेशंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट डेटा टाइप इज माय लिस्ट। सो लिस्ट क्या करेगा, एलिमेंट्स को लिस्ट करेगा सिर्फ, ओके। सो लिस्ट इज अ मोर जनरल सीक्वेंस ऑब्जेक्ट दैट अलाउज द इंडिविजुअल आइटम्स टू बी of different types, like my string in the Java, string in the C++. जैसे कि array क्या करेगा, array stores the element which have same data type. Similarly, list stores the data which have different data types. ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। list is a kind of data type but it can store the different uh, variables which have different types, okay, equivalent to arrays in other language. देखो उन लोग ने बोला list have no fixed size and can be expanded or contracted as needed, means we cannot say that we cannot definite the size of list as we can expand or contracted as per the our need. Items in list can be retrieved using the index. So this item can be retrieved using indexing, like from starting from 0 to n minus 1, okay, or n minus 1 have no limit, means we can say that infinite uh, will be attached to that n minus 1 as well, okay. And the last point is list can be nested just like arrays, that is you can have a list of lists, means एक list के अंदर और एक list ऐसे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, like we can perform those kind of operations in array as well, in the condition if condition as well, okay. अब ये देखो यहाँ पे उन लोग ने सिंपल एक लिस्ट बनाई है एंड दैट लिस्ट एल वेरिएबल बनाए, द एल वेरिएबल रिप्रेजेंट वन लिस्ट विच कंसिस्ट three different elements. The first element is integer, type of integer, second is float, and third is my string, okay. And whenever I am printing that L variable, so I can get this list from 1 to 3 to 3.14 to hello, okay. यहाँ पे देखो उन लोग ने प्रिंट किया है L of zeroth position, तो zeroth position पे कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट, सो वो प्रिंट हो रहा है। now here we can see the nested link, okay. see this square bracket is the is my main square bracket, and in that main square bracket I can pass the three different list 1 2 3 4 5 6 and 7 8 9, clear with this। ये जो मेरा है ब्रैकेट, ये मेन ब्रैकेट है एंड ऑन दैट मेन ब्रैकेट DDL में मैं 3 लिस्ट पास कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे देखो उन लोग ने दिया है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ओके। sorry, here we cannot, okay. then the next is dictionary, and आई गेस ये हम लोग ने देखा है डेटा टाइप वाला कंसेप्ट, लेकिन एक बार फिर देखते थे, ठीक है। डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड मैपिंग्स ऑफ नेम value associations, comparable to hashes and associative arrays in other language, intended to approximate how humans remember associations, like D is equal to, ये हम लोग ने देखा है guys, ये सब डिक्शनरीज एंड ऑल काइंड ऑफ सब, ये मैं भूल गया था बट हम लोग ने देखा है, like name apple मैंने असाइन किया, so if I'm printing the name value then I get the apples. Similarly, if I am printing the accessing the color value, I get the red. Test for sweet and number for 5. So dictionary means to store the meaningful data while we are accessing the Python program. Then similarly, the files objects are built in interacting with the files, like open, write, फिर read कर सकते हैं हम लोग, okay. So basic file operations. Mutable versus immutable. Mutable means we can change. Immutable means we cannot change. Number strings and tuples are immutable, okay. Number strings and tuples are immutable, that is cannot be directly changed, we cannot change. Immutable मतलब we cannot change. List, direct, dictionaries and states can be changed in place, so ये उन लोग ने example दिया है, okay. Tuples are immutable, list maintain integrity of data during the execution, and sets is a special data type introduced since Python 2.4.
So sets is nothing about our the means एक पर्टिकुलर सेट हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं लाइक नेम सेट फ्रूट सेट ओके सो द सेम काइंड ऑफ डेटा कैन बी stored and this itself is mutable means we can change this data as per our need as per our wants. Okay, so here we are done with the Python first chapter. In this chapter we have seen the features, the building blocks, the environment setup, simple Python scripts and data types. Okay, now on the next lecture we are going to start the second unit which is operators and control flow. इजी एकदम ऑपरेटर्स हम लोग को मालूम है, अरिथमेटिक वही सेम ऑपरेटर्स रहेंगे, सिर्फ पाइथन का जो सिंटैक्स है वो अलग रहेगा, थोड़े बहुत प्रोग्राम भी देखने वाले हैं उसके ऊपर. और कंट्रोल फ्लो में इफ एल्स एंड वाइल फॉर लूप जो हम लोग ने ऑलरेडी देखा है वही सब देखने वाला है, सिर्फ ये रिगार्डिंग टू पाइथन रहेगा, दैट्स ऑल, नथिंग स्पेशल. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये ऑपरेटर्स एंड पाइथन्स देखेंगे. उसके बाद फिर चैप्टर 3 से आपका एक्चुअल पाइथन चालू होने वाला है, चैप्टर 3, 4 एंड 5th. ओके, 6b है फाइल ऑपरेशंस. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.